Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand's nursing file. Today in this video we learn about the glomerulonephritis nursing care plan here. This is very important nursing care plan for the examination purpose and also the practical file work. तो आइए देखते हैं glomerulonephritis nursing care plan. Nursing care plan, glomerulonephritis here. Nursing care planning goal for the child with acute glomerulonephritis is directed toward the excretion of the excess fluid through the urination, participate in activity with intolerance, prevent infection and absence of complications. These are the goals of this care plan. Here, before going to learn about the care plan, we learn here the first acute glomerulonephritis. What is here? This is an alteration in renal function caused by the glomerular injury here, which is characterized by the classic symptoms of glomerulonephritis here: hematuria, proteinuria, edema, usually periorbital, and hypertension and oliguria. नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा नर्सिंग केयर प्लान है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. Here, nursing care plan and nursing diagnosis for acute glomerulonephritis. Here, first nursing goal for this. Here, excess fluid volume. Second, activity intolerance. Third, risk for injury. And fourth, risk for infection. तो सबसे पहले देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, जिसका यहाँ डायग्नोसिस होगा. Here, this is nursing care plan format. Here we use the nursing assessment step: diagnosis, goal, intervention, rational, and their evaluation in last after completion of the diagnosis. तो यहाँ पर हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप देख रहे हैं. इसमें से सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट स्टेप्स. एयर नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा, चाइल्ड सेज दैट आई एम हैविंग डिक्रीज यूरिन आउटपुट और oliguric condition. Here objective data here: assessment of the vital sign, azotemia, altered electrolytes, crackles and pleural effusion, edema, puffiness and in the face. On the basis of these assessment data, we write the here nursing diagnosis for either this patient. Nursing diagnosis is excess fluid volume related to decrease in regulatory mechanism, renal failure. यहाँ पर इसका गोल होगा टू मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस. नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन एंड दियर रेशनल. एयर specific intervention number first: monitor vital sign every 4 hourly and notify and any significant changes. मीन्स वाइटल साइन हमको एवरी 4 आवर्ली चेंज करना है और कोई चेंज है तो वो हमको नोटिफाई करना है. नेक्स्ट रेशनल होगा इसका एन असेसमेंट प्रोवाइडेड बेसलाइन इंफॉर्मेशन. ये हमको बेसलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे. हाँ, यहाँ हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखा है. इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑन द एक्शन पेज जो आप नर्सिंग केयर देते हो उस समय हम फेज लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये नेसेसरी नहीं है. दिस इज़ सफिशिएंट ड्यू टू इन इम्प्लीमेंटेशन फेज वी राइट एक्शन आफ्टर कंप्लीशन द वर्क. जैसे कि यहाँ मॉनिटर वाइटल साइन, तो इम्प्लीमेंटेशन फेज में हमको लिखना है मॉनिटर्ड वाइटल साइन. Next, second intervention: auscultate breath sound for the presence of crackles. Here, rationale for this: crackles upon auscultation indicate a fluid accumulation resulting in pulmonary congestion. Number third intervention होगा यहाँ पर weight the child on the same scale at the same time daily, monitor intake and output accurately. Here, rationale for this: weight gain results from fluid retention. Accurate measurement of intake and output help assess fluid balance. Number fourth intervention: measure and record abdominal girth daily. Here, rationale for this: edema normally observed in the abdomen, which may increase as the condition progress. Number fifth intervention: administer diuretics as prescribed. A rationale for this: decrease
plasma volume and edema by causing diuresis. नंबर 6 इंटरवेंशन देखते हैं. इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू maintain fluid restrictions as indicated. Rational for this, the amount of fluid allowed to the take depend on the level of kidney function. Next, number 7, assess the child to do position change every 2 hours. Here, rational for this, frequent position change lessen pressure on the body part and prevent the accumulation of the fluid in the dependent area. Number 8, intervention है elevate edematous body part while the child is in bed or sitting in chair. इसका rational होगा help remove fluid away from the dependent body part through the gravity. Number 9, intervention explain to the child as appropriate and family about the acute glomerulonephritis including its signs, symptoms, diagnosis and management. यहाँ पर इसका रेशनल होगा प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज विच इंक्रीज compliance with the treatment regimen. Number 10, intervention refer to a dietitian for a consultation to develop a meal plan low in sodium, potassium and protein that include preferred food as allowed. Here rational होगा a proper diet play a vital part in controlling the symptoms, maintaining nutrition and in the management of the disease. आफ्टर कंप्लीटिंग दीज इंटरवेंशंस हम यहाँ पर एवेल्यूशन प्रोसेस लिखेंगे. यहाँ एवेल्यूशन होगा मेंटेन्ड फ्लूइड बैलेंस जो हमारे यहाँ गोल था. आइए एक बार फिर देखते हैं गोल. नर्सिंग डायग्नोसिस का गोल था टू मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस और इसको हमने डिफरेंट इंटरवेंशन से अचीव किया है. और यहाँ पर जो हमारा गोल अचीव्ड हुआ है इन एवेल्यूशन दैट इज़ मेंटेन्ड फ्लूइड बैलेंस. तो ये फर्स्ट केयर प्लान कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 2. ईयर एक्टिविटी एंड टॉलरेंस. इसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, इंटरवेंशन एंड रेशनल. नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा योर पेरेंट्स वर्बलाइज दैट अवर चाइल्ड फील वीकनेस एंड फटीग. एंड ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं चाइल्ड लुक्स लेथार्जी. On the basis of these assessment, we write a diagnosis, the activity intolerance related to anemia and bed rest. This is diagnosis and यहाँ पर हमारा goal होगा to progress tolerance of activities. Miss child activities को tolerate कर सके, एक्टिव हो, लेथार्जी नहीं हो. यहाँ पर रेशनल इंटरवेंशन है उसके रेशनल देखते हैं. इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट है assess the level of weakness and fatigue, ability to move about in bed and engage in play activities. Rational for this, provide data about energy reserves during the acute stage of the disease and recognition of the bed rest status. Number 2, intervention. Here encourage bed rest during the acute stage, disturb only when needed. A rational for this, conserve energy and limit the production of waste material which increase the work of the kidney. Number 3, intervention. देखते हैं schedule care and provide rest periods after any activity in a quiet environment. A rational होगा यहाँ पर provides adequate rest and reduces stimuli and fatigue. Number 4, intervention. Provide for quiet play, readings, TV games and symptoms subside. As symptoms subside, here rational होगा provides a diversion, stimulation and requires minimal energy expenditure. Number 5, intervention देखते हैं. Explain to the child and parents the purpose of activity restrictions. Here rational promotes understanding of the need to conserve energy and rest to help in recovery. Number 6, intervention. Inform parents and child about the importance of rest. यह रेशनल होगा avoids fatigue and conserve energy during recovery. After providing these interventions, next 7 intervention. Instruct parent and child to rest when feeling tired. Rational होगा prevent fatigue and promotes here. After providing these interventions, we write here evaluation step. The child progresses to increase tolerance for an activity. तो ये हमारा जो गोल था दिस इज टू प्रोग्रेस टॉलरेंस ऑफ एक्टिविटी ये
आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंशंस हमने इनको यहाँ कंप्लीट किया। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 3, रिस्क फॉर इंजरी। यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट होगा नॉट एप्लीकेबल ड्यू टू दिस इज रिस्क डायग्नोसिस। और इसका ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं, वाइटल साइन, असेसमेंट ऑफ इंटीकर्ट आउटपुट एंड एडिमा। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन। यहाँ पर गोल होगा टू डिक्रीज रिस्क फॉर इंजरी। नेक्स्ट इंटरवेंशन एंड देयर रेशनल इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट, असेस द वाइटल साइन। रेशनल होगा इसका, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डेंजरस इफेक्ट ऑफ द हाइपरटेंशन that is present in this disease. Next number second, assess changes in intake and output, extent of edema, decrease urinary output, headache, pallor, electrolyte balance. Are rational for this, reveal sign and symptoms of possible renal failure. Number third intervention, administer antihypertensive diuretics therapy, cardiac glycoside as ordered, observed for therapeutic इफेक्ट। ये रेशनल होगा यहाँ पर, प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर कॉम्प्लिकेशंस इफ ए मोर सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट इज प्रेजेंट। नंबर फोर्थ इंटरवेंशन देखते हैं, ऑब्जर्व बिहेवियर चेंजेस इंक्लूडिंग लेथार्जी, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस associated with the hypertension and administration of the anticonvulsant if ordered. Here rational logo indicates need for safety precautions associated with seizure activity as a result of cerebral changes. Number 5 intervention देखते हैं, encourage food low in sodium, potassium and protein during the acute phase of acute glomerulonephritis. Instruct to increase intake of food high in carbohydrate and fats only during the acute phase of acute glomerulonephritis as ordered. Here interventions rational here, provide nutrition during the acute period with the limitations of potassium during oliguria, sodium with the presence of edema, protein limitations if oliguria is prolonged. Next number 6 intervention, limit fluids as ordered, allow intake of the amount lost by urine and insensible losses. They are rational for this, avoids additional fluid retention edema in the presence of the renal damage. Number 7 intervention here, inform parent to report any weight gain, hematuria with decreased urine output, complaints of the headache and anorexia. Rational for this, provide for a prompt intervention to prevent severe renal damage. Number 8 intervention, teach parents regarding dietary inclusion and restriction, provide a list of foods to include and avoid that comply with sodium, potassium, protein allowance. Rational for this, provide nourishment while the disease is being resolved. Number 9 intervention, encourage to allow activity rest period as energy and fatigue required progressively increase as condition warrants. Rational for this, prevents fatigue and conserve energy during the acute stage and convulsions. Number 10 intervention, reinforce to parent that need for follow-up care and supervision. Rational for this, ensure ongoing monitoring of the child to chronic renal disease or infection persistent streptococcal. After providing these interventions, we write the evaluation step. Now the decrease risk for injury, जो हमारा गोल था रिस्क ऑफ इंजरी टू डिक्रीज रिस्क ऑफ इंजरी, वो यहाँ पर वही डिफरेंट नर्सिंग डायग्नोसिस हमने अचीव किया है। नेक्स्ट नंबर 4 केयर प्लान देखते हैं, रिस्क फॉर इन्फेक्शन। नर्सिंग असेसमेंट सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज रिस्क डायग्नोसिस here. Next objective data, vital sign and throat culture here. Nursing diagnosis, risk for infection related to disease, and here goal is to reduce risk for infection. Intervention and their rational देखते हैं। First number, assess temperature, chills, sore throat, cough, presence of recurrence. Here rational for this, reveals persistent of streptococcal infection. Number second, obtain throat culture for analysis and sensitivities. Here rational for this, identifies streptococcal microorganism and sensitivity
to specific antibiotic therapy. Number third intervention, administer antibiotic therapy to child and to family member if ordered here. Rational for this, destroy microbial agents by preventing cell wall synthesis and prevent transmission to family member. Number fourth intervention, provide proper disposal of used tissues and arteries here. Rational for this, prevent transmission of microorganism to other and reinfection. Number fifth intervention, instruct parent about the importance of taking the full course of antibiotic therapy. A rational for this, promote parental understanding and prevent the development of the super infection. Number sixth intervention, instruct child and family to do hand washing after sneezing, coughing, and to proper dispose used tissue here. Rational for this, prevent transfer of disease. Number seven, instruct parent to avoid exposure of the child to other with the existing upper respiratory infection. Here, rational for this, avoid respiratory infection in the susceptible child. Number 8 intervention हो गया यहाँ पर, instruct parent to notify a health care provider if fever, cough, sore throat if present. यहाँ पर इसका rational होगा indicate infection and provide for early interventions. After providing these interventions, we write here evaluation. Now the risk for infection is reduced. जो हमारा यहाँ पर गोल था या to reduce risk for infection वो achieved हुआ है. Why this इंटरवेंशन दीज इंटरवेंशंस. तो ये था हमारा नंबर फोर्थ नर्सिंग केयर प्लान. यहाँ से आप देख सकते हो. और ये एवेल्यूशन रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिड्यूस्ड. तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो नर्सिंग केयर प्लान ऑन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपनी लाइक्स कमेंट भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो. थैंक यू.